नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह और आइए शुरू करते हैं अपना सफर यानी संस्कृति यात्रा। मॉनसून के मौसम में सांप दिखना एक आम बात है, पर जहां एक ओर सांप के दिखने पर कुछ लोग डर जाते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में कई जगहों पर सांपों के राजा नाग देवता की पूजा भी होती है। और आज की यात्रा के पहले सेगमेंट विशेष में हम जाएंगे कर्नाटक और देखेंगे नाग मंडला। कोस्टल कर्नाटक की कई जगहों पर समर्स में नाग मंडला का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में नाग को देवता माना जाता है, इसलिए लोग प्रॉस्पेरिटी की इच्छा में नाग देवता की पूजा करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रंगों से नाग की बड़ी सी शेप बनाई जाती है और इसके बाद सेक्रेड म्यूजिक के साथ पात्री यानी फीमेल फॉर्म और नागकाली यानी मेल फॉर्म में ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स के साथ नाग देवता को पुकारते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रांस में चले जाते हैं और पूजा में आए लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यह सिलसिला कई बार रात भर चलता रहता है। पूजा के साथ ही नाग मंडला कम्युनिटी गैदरिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए नाग मंडला के बारे में थोड़ा और जानते हैं और देखते हैं फिल्म नाग मंड्या नागा वर्शिप इन दक्षिण कन्नड़ के कुछ अंश। The oceanic waves touch the land of Dakshina Kannada, which dates back to mythological Parshuram Bhumi. This historic land remained an epic center of all the culture and belief systems. Dakshina Kannada enthused broad-spectrum cultural continuum and paved the path for amalgamation as well. This land of Dakshina Kannada produced the great thinker Dr. Shivarama Karanth, whose works provide us an avenue to fathom micro and macro culture. Creativity encoded in the shrines of Dakshina Kannada within the hyphenated work of art at theological level covers even the towering temples and mosques with a touch of excellence and harmony. Within the blue expanse, the statue of Gomateshwara reminds the world about the ahimsa and renunciation. All are grounded in this land deeply. So is the case of worshipping Nagadevta, another millennia-old folk heritage of peninsular India. Silent waves of Samudra of Dakshina Kannada churn out its own historicity. The Western Ghat is studded with the splendor of nature. Along the banks of Kumaradhara, the mythology of Nagadevta beams its presence, and this mystic land of Naga worship need to be fathomed first before we encounter the wonderful yet mystical Naga Mandala celebrations. Now we pass beneath the Mahadwara of Lord Subramanya, who is on his Vahana peacock. The five-faced sacred hood of Naga remains his umbrella. We are now in the sacred space of Kukke Subramanya Kshetra. The well-spaced Gopuram with flocking devout creates the ecclesiastical corridor to understand the mythical Naga worship within the sacred shrines of Dakshina Kannada. Devotees first come to Adi Subramanya Shrine to get the blessings. The Adi Subramanya Shrine emits its brilliance with its five-faced hood, which is the sole iconographic depiction of Nagadevta. The mesmerizing icon, the Aarti, and finally its Jyoti remain a blissful affair for all the devouts. Now we are nearing Darpana Tirtha. The traverse through reflections within the woods takes us to the world of Nagavana. Beneath the tree, one finds grandeur of iconographic depiction of Naga besmeared with vermilion, enthusing one and all. These Naga Kallus or stones are brought
from different Nagavana, which is mandatory in the agrarian world of Dakshina Kannada. In case the land is sold, people collect their Nagamurtis from the Nagavanas and keep it here to avoid any Nagadosha. From Nagavana, we moved to Sri Subramanya temple. We captured the vibrant procession of Utsavamurti, which creates a unique atmosphere of sacred kind. Devotees flock with Utsavamurti amid sound and silence of spiritual contours. For the agrarian community, serpents remain closer to the heart of a farmer. Because serpents eat rats and save the agricultural produce, so sociologically a close relation exists between people and Naga. Naga is thus protector for the humankind. But if one Naga is killed, people fear the Nagadosha. To ward off the curse of Naga, they do Naga Pratishtha rituals here. People from all over India come to this place to worship Naga. While fathoming the oral tradition, we notice that in Dakshina Kannada, all the temples of Shiva, Vishnu or Shakti Naga Aradhana remain a mandatory aspect of spiritual cultivation. We are now in the temple town of Udupi, where spiritualism of both folk and Vedic traditions are housed together with the amalgamative perspective. The awe-inspiring Krishna Mandir is one such contour of this sacred space. Krishna and Vishnu incarnations are always deeply studded with the world of Naga. The Naga temple remains a unique corridor to the god of Patala Bhumi. Anthill-studded Naga Devta radiates a vision of coiling out the serpentine sleeping energy to the full. Serpent worship, though, does not have any obvious Vedic reference, but since the Puranic era, Naga worship remains a deeply embedded factor in the spiritual culture of India for several millennia, especially in the context of folk tradition. Snake worshippers remain a pan-universal factor, and even we find the wide reflections of snake and its symbolism in sacred art and aesthetics to the aspect of temple architecture. The sacred Naga even has an elevated position in Buddhism. Naga worship remains a major aspect of Indian folk heritage. To comprehend for finer aspects of Naga folk iconography and belief system, we traveled through two woods and reached Edadi Matyadi village. Tribal Nagas have upkept the tradition of Naga Upasana in a traditional way. Here, one encounters Khadya, the anthill where Naga Devta resides. This unveils the lesser referred folk reverence of serpent worship amongst the Mira. These tribal people have a special ritual encompassing black cobra, which is known by the name of Khadyanata. The anthill remains the ritualistic contours. Beneath it, one finds earthen pots which are specially shaped by potters with sculpted serpent numbering 7, 9, 11, geometrically positioned to create a roundish movement with upward looks. Anthill with awe-inspiring looks creates an inroad to travel back in time. One may recall the mythological vision of Valmiki, enveloped by anthill, which not only showed the metamorphosis through time, but uniquely demonstrates the unveiling of pious mind within the ambience of anthill. Thus, anthill remains a space to journey from tangible to intangible. So is the concept of Naga, through its journey from anthill to the mind of devout, which besmear the sacred mind of all. From tribal society, we now move to the agrarian society of Dakshina Kannada. Our destination is Kolkebelu, 30 kilometers from Udupi.
The century-old Bagala tree dots the greenscape of Dakshina Kannada. The Nagavana remain the major punctuation where icons of serpents positate on the base of the trees, which tell us the story of folklore and belief system encircling Naga worship. This is the sacred space for the celebration of Naga Mandala. This is the heritage house of the patron of Naga Mandala Utsav. For centuries, the Bant communities, who are the landowners, have been patronizing this agrarian folk heritage of Naga worship. Ganesha remains the Vigna Nivaraka, so before the Naga Mandala Puja, Lord Ganesha is worshipped, who facilitates a smooth and uninterrupted celebration. Folk musical instruments like Mukhavina, Dhakke, Shruti and drums create the acoustic inroad to these great celebrations. On the eve of Naga Mandala, elaborate rangolis are made to create a space for spiritual nurturing. Homakundas and mandalas are some of the Vedic rituals which have got a space in folk traditions of Naga Mandala. The aspects of Nagadosha are removed through various rituals. It is said that there are 64 kulas of Nagas. Thus, the priest places 64 pinda to all Naga kulas to appease the departed souls of Naga. This bowl of rice, mixed with turmeric, topped with vada, are offered as pinda. It is said that once Nagakula are appeased, then there would not be any impact of Nagadosha in the performance of Naga Mandala. This ritual is called as Ashlesha Balividhi. O light, O sun, O enlighter of the world, you remain the source of all life and spirit in this world. Today, being the auspicious day of Naga Mandala, special yagna and homa would mark the day. Homa remains the mode of connection from this to the other world. Mortals' offerings are taken to gods by Agni. In the Rangamanch, we saw last night some homa to appease spirits and evil forces. This daytime yagna allows a worship to Ganapati, the planetary configurations, and the world of celestial gods and goddesses. These homas are Ganahoma, Navagraha Homa, Pavamana Homa, Kushmanda Homa, Til Homa, Kalatattva Homa, Snapanadi Vasa Homa, Ashalesha Bali Upadhyapana Homa. Dana to 8 brahmacharyas are given here. Yajman and Patni perform Godana. These danas space out a journey from Vedic rituals to the folk tradition. The transition to the folk world of Naga worship centers around the Nagavana, where symbolic ritual and aspirations are deeply seated beneath the sacred hoods of Naga. The chief priest bows to the Kalasha, which is decorated with betel nuts and flower. As if in trance, the priest gesticulates like a Naga and takes out the flower. Then the Kalasha would be given for its traverse to Nagavana, where Jala Abhishekam would take place. Yajman and Patni accompany Nagapatri in a procession. Nagapatri remains the main character, who would be in deep trance of Nagabhav while performing. Then a special puja of Nagabana would take place. Once rubbed with betel nut flour, Nagapatri goes in procession and approaches the kitchen. The large mound of rice decorated with a motif of serpenthood. The ceremonial big serving spoon
decorated with betel flower is thrown. Then all the foods are sprinkled with betel flour to connect them into sacred prasadam. It is interesting to note that one needs to rub the betel flour to get in trance and also to come out of it. This unique agrarian festivity is studded with the philosophy of making all to take food or prasadam, so Nagadevta becomes happy. The agrarian symbolism with sociological harmonized blend remains a statement of this folk festival, where all are respected and revered. After the Anna Santarpana Naga Mandala celebrations would start. अभी आप देख रहे थे फिल्म नाग मंडिया, नागा वर्शिप इन दक्षिणा कन्नडा के कुछ अंश। भारत में जैसे धार्मिक फेस्टिवल्स के लिए पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाता है, वैसे ही क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भी ऑडियंस की कमी नहीं है। यूं तो भारत में क्लासिकल म्यूजिक के कई फॉर्म्स हैं और सभी की कुछ न कुछ स्पेशलिटीज हैं, लेकिन जब बात ध्रुपद की हो तो यह संगीत की गंभीर शैली के साथ ही एक स्पिरिचुअल और मेडिटेटिव क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म है। सिंपलेस्ट अकम्पानिमेंट केवल तानपुर और पखावज के साथ गाई जाने वाली ध्रुपद गायकी के भारत में कई घराने या स्कूल हैं और इनमें से एक है डागर घराना। ये घराना अपनी मेडिटेटिव डागर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने की शुरुआत 15वीं सेंचुरी से मानी जाती है और यहां से एक से बढ़कर एक ध्रुपद गायक निकले हैं। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक उस्ताद नासिर फयाजुद्दीन डागर के पुत्र पद्मश्री उस्ताद फयाज वासिफुद्दीन डागर इसी ट्रेडिशन के एक फ्लैग बेयरर हैं, जिन्होंने ध्रुपद म्यूजिक को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाने में एक वाइटल रोल प्ले किया है। तो आइए हमारी यात्रा के सेगमेंट धरोहर में सुनते हैं पद्मश्री उस्ताद फयाज वासिफुद्दीन डागर को।
अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्मश्री उस्ताद फैयाज वासिफुद्दीन डागर को। संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन माटी सुगंध की ओर। भारत के विलेजेस की कल्चरल मैपिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मेरा गांव मेरी धरोहर के नाम से एक प्रोजेक्ट चला रहा है और इसी एफर्ट के चलते हम चलेंगे एक ऐसी जगह जो भारत का ऑरेंज ऑर्चिड भी है। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित नागपुर ग्रामीण विकास खंड की ओर, जो कि अपने ऑरेंज ऑर्चिड के लिए ही प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए चलते हैं नागपुर ग्रामीण विकास खंड की ओर। नागपुर ग्रामीण विकास खंड महाराष्ट्र के नागपुर जिले का वह क्षेत्र है जहां सूरज की पहली किरणें खेतों में जीवन का संचार करती हैं और परंपराएं समाज की जीवंतता को प्रकट करती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित नागपुर अपनी कृषि, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों का संगम है। शहरीकरण ने यहां कुछ बदलाव लाए हैं, लेकिन यहां की परंपराएं और रीति रिवाज आज भी जीवन का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। नागपुर ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण यहां के संतरे के बगीचे हैं, जिनकी विशेष पहचान न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश विदेश में भी है। नागपुर के संतरों को जीआई टैग भी प्राप्त है। इन संतरों की मिठास और खट्टापन यहां के शांत वातावरण में और भी विशेष बन जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मूंगफली और गन्ने जैसी प्रमुख फसलों की खेती होती है। नागपुर के कोराड़ी में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर देवी लक्ष्मी के दिव्य रूप का अद्भुत उदाहरण है। किंवदंतियों के अनुसार वर्तमान में पूजी जाने वाली कल्याणी माता महालक्ष्मी जगदम्बा का रूप देवी जाखुमाई से उत्पन्न हुआ है, जिनका संबंध महाभारत काल से है। नागपुर का व्रॉट आयरन हस्तशिल्प इस विकास खंड की पारंपरिक कला का अहम हिस्सा है। नागपुर में प्रमुख त्योहारों के रूप में नवरात्र सबसे प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और देवी की आराधना करते हैं। इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और लोक नृत्य आयोजित होते हैं। नागपुर में गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत और श्री राम के अयोध्या लौटने के अवसर पर होता है। इस दिन गुड़ी बांस की लकड़ी को रंगीन कपड़े, बर्तन और फूलों से सजाकर घरों और छतों पर स्थापित किया जाता है। लोग इसे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और इस अवसर पर लोक गीतों और नृत्य के साथ उत्सव मनाते हैं। साऊजी करी अपनी तीव्रता और मसालों के लिए जानी जाती है, जो खाने में एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। नागपुर ग्रामीण अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। तो ये थी हमारी आज की संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। आईजीएनसी के कला निधि विभाग द्वारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संस्कृति चिंतन। मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य ने इस विषय पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्कृति और सभ्यता में यदि सामंजस्य न हो तो समाज में गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं। संस्कृति को लेकर के जब भी कोई चर्चा विमर्श के बतौर होती है तो हमेशा इस बात का एक विवाद चलता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, या दोनों एक हैं क्या अलग अलग हैं। सभ्यता अधिक महत्वपूर्ण है कि संस्कृति अधिक महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद जी ने ये लिखा है, संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संस्कृति अंतर का विकास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजीएनसी के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने की। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो संस्कृति का है, और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैं मानता हूँ कि हमारे ऋषि महर्षियों की श्रेणी में वो आते थे, और वे हमें आज भी
रहें न रहें, उनके विचार हमको प्रेरित करते रहेंगे। जबकि आरंभिक वक्तव्य कला निधि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने किया। इस व्याख्यान में विद्वानों, शोधार्थियों और सांस्कृतिक जगत की सहभागिता रही और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान हुआ और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्राप्त हुआ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।